Hello. Okay, so I'm live, I guess. Mm, mm, give me a few minutes. This is my first time going live, so hi Avinash. Just give me a minute. I'll just put the screen back in a minute. Uh, it's my first time actually going live on any platform because I'm not much of a social person as much like in my personal life too. So bear with me for a few more minutes, I would say.
Yeah, sorry for the black screen that you were watching at for this money. And I would like to say sorry in advance in case you're bothered by the deep breaths I'm taking right now, because actually I'm a little ill. तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है. So do let me know if you are facing any difficulties अगर screen ना दिख रही हो या सुनाई ना दे रहा हो, because this is like my first live ever. So there could be issues. ऐसा हो सकता है कि मुझे लग रहा है मैं screen दिखा रहा हूँ but ना दिखा रहा हूँ. But though by side I'm a developer too, तो इतने बड़े blunders नहीं होंगे. I hope so. How would I be able to see the chart in case I'm... Mm, okay, this is better. Thanks, Savannah. You've been a great support throughout. Thanks, Shraddha. Thank you for all the comments that you've provided onto the videos. It's really helped. Thanks, Avinash. Okay, so without further ado, we would directly jump onto... Yeah, I would say that there are as such no recommended trades for now. अभी as such कोई recommended trades नहीं है in the market, but you could always look for the opportunities because abhi, as you can see, we have just come out of a dump, and it's a massive around 21% dump if you would see मतलब पिछले 2 दिन में ही. So we're in a very dicey situation right now कि आगे dump दोबारा से हो सकता है या फिर it would go up. So yeah, so it's kind of a situation in which you try to play safe, because at the end of the day it's not about taking trades, it's about increasing the portfolio that you have, right? चाहे 2% बढ़े चाहे 5% बढ़े, it's all about taking good trades. So we'll see कि क्या कोई trades हैं कि नहीं है. You could also comment down any coins if you actually personally take trades in, so I could see and tell you कि इस coin में particularly कोई opportunity as such arise कर रही है नहीं कर रही है, what I'm seeing on the charts basically. Okay, so first of all I would just start with doing the analysis of Bitcoin, what happened, what we said could happen, and what is the situation that we are in right now, और आगे क्या हो सकता है, what are the possible outcomes too. So sorry. um so yeah, okay, would see FTM2. First let's go through the Bitcoin update because it's actually important, क्योंकि जो भी होगा वो बिटकॉइन के बेसिस पे होगा अभी इस टाइम पे. एज यू हैव सीन कि बिटकॉइन अराउंड 21% डंप किया है, सारे ऑल्ट्स आर लाइक 30 25% डंप्ड है. इवन fundamentally strong coins like Ethereum and Solana also are down. BNB is also down. So let's see what do we have on plate for Bitcoin, and then we'll go to the other altcoins. Okay, because Bitcoin is very important right now. जो भी Bitcoin में होगा, this would decide कि what are we going to see in the coming nearby future. Okay, so directly going to the Bitcoin update, and in case you are out there, so you can just like the stream. This would actually increase the reach जिससे कि बाकी लोगों को दिखेगा. So they would be able to join the stream too, because I know I don't have much reach right now. Okay, so in the previous videos, like मैंने अपने चैनल पे I guess around मैंने काफ़ी टाइम से अपने चैनल पे वीडियोस बनाई हैं जिसमें कि मैं कंटिन्यूसली ये बता रहा था कि हम वी माइट एंड अप सीइंग अ डंप हियर, एंड वैसा ही हुआ. एंड ये एक पॉसिबल हॉरिजॉन्टल ट्रायंगल था जिसका ब्रेकआउट प्रिडिक्ट किया गया था, एंड जिसके बारे में आई ऑल्सो
I also told you guys in the Telegram channel, in case you have not joined the Telegram channel, to join the Telegram channel too. So इसके बारे में काफी बार बातचीत भी हुई थी, and we told you guys that there is a breakout that is quite near ये, in case you could see this. And इस वीडियो में भी आई एम क्वाइट, तो इसको इनवैलिडेट करने के लिए बीटीसी क्या कर सकता है कि अगर वो यहाँ से ऊपर चला जाए 42K के ऊपर ही रहे और इसको तोड़ दे और फिर इसके ऊपर से ऊपर जाए, ऊपर चला जाए, तो बात बन सकती है। नहीं तो हम कम से कम कुछ नहीं तो इस जोन तक तो आ रहे हैं, दिस जोन। एंड in case we break this zone also, we'll go to the red zone. So the red zone is the exact zone in which we are right now. तो इसी जोन में अभी हम हैं। तो हुआ क्या बेसिकली, वी ब्रोक डाउन ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल ट्रायंगल, ऐसे बाहर आए, एंड देन मतलब यूजुअली ऐसी चीजें ऐसे नहीं होती हैं। इट्स नॉट लाइक कि बोल दिया कि हाँ ब्रेक डाउन होगा तो things would go like this. So it does not usually happen like this. So what Wales did was they gave a kind of a bull trap जिसमें लोग फंसे। तो लोगों ने यहाँ से शॉर्ट कर दिया बिकॉज दे न्यू कि हाँ ये ब्रेक हो रहा है एंड देयर इज गोइंग टू बी अ डाउन साइड टू इट। So as soon as this happened, bulls went with the um, like they pushed the they pushed the price, I would say, like you can just assume, but they did that। और फिर लोग यहाँ पे जैसे ही बुलिश हो गए एंड दे स्टार्टेड गोइंग फॉर द लॉन्ग्स, दे वेंट फॉर द स्टॉप लॉस हंट्स, एंड ये डंप हमें देखने के लिए मिला। फिर वी काइंड ऑफ सकम टू इट, यहीं पे थोड़ी देर के लिए रुके थे। फिर दैट देन ऑल्सो आई अपडेटेड यू गाइस कि अगर हम यहाँ ज़्यादा देर तक रुकते हैं एंड यहाँ से एज सच मेजर पुल बैक नहीं मिलता है, तो वी कुड सी दिस लोअर जोन विच वॉज दिस 37,000 से 35,000 के बीच वाला। So exactly the same thing happened, and I was updating you guys regularly in the Telegram channel also that this is a possibility. This could actually happen, और वही हुआ। And right now also if you see closely, तो हम पहले तो हम सीधा सीधा यहाँ पे डंप करके नीचे की ओर आए। हमने यहाँ से बाउंस लिया, पहला बाउंस मिला, दूसरी कैंडल मिली, तीसरी कैंडल नीचे तक गई, चौथी कैंडल जो है अगर क्लोजली देखा जाए तो वो रिजेक्ट हुई है इसी जोन से, और पांचवी कैंडल भी अभी रिजेक्ट हो रही है। तो अभी इस टाइम पे ये जो कैंडल्स हैं ये बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करेंगे बिकॉज वी हैव सीन अ मेजर डंप। जैसा कि मैंने बताया अराउंड 21 to 22% डंप देख लिया हमने यहाँ पर। तो दिस वुड डिसाइड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस, डेली पे अगर हम जाके देखते हैं तो जो चीज़ है जो कि मैं कल भी आप लोगों को अपडेट कर रहा था इन द टेलीग्राम चैनल, आई टोल्ड यू गाइस अबाउट कि हमें जो क्लोजिंग है वो एटलीस्ट इसके ऊपर मिले, नीचे ना मिले। ओके, इसके ऊपर मिले। एंड चार्ट कहाँ गया, दिस 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 वाज द चार्ट या। तो ये बाउंस किया था यहाँ से बट इट वाज नॉट लाइक सक्सेसफुली नॉट एबल टू होल्ड इट एंड वी केम डाउन। तो अभी इस टाइम पे ऑन लॉन्गर टाइम फ्रेम आई वुड से कि ये कुछ जोन्स है जो कि आप देख सकते हो लॉन्गर टाइम फ्रेम्स पे। एक पहला जोन जो है वो है 35,900 से लेके 34,800 तक का, जहाँ पर जिसके बीच में आई थिंक इज अ माइल्ड सपोर्ट। फिर जो लास्ट सपोर्ट दैट वी हैव लाइक एक्चुअल व्हाट टू से, ऐसा सपोर्ट जहाँ पर कि थोड़ा वॉल्यूम है, जहाँ पे कि बिटकॉइन ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया है, वो जो है वो 29,000 वाला है। उसके बाद तो लाइक वी हैव दी जोन्स जिसमें कि बिटकॉइन बहुत एस्केलेट किया है, ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो उसके बारे में हम बाद में देखेंगे हाउ वुड वी डू दी how would we do the analysis for that, but अभी फिलहाल these are the zones। ये एक माइल्ड सपोर्ट है अराउंड 32,400, बट these are all on the daily। अगर आप इंट्राडे या रोज की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके लिए I would chart it out and send the send the marked charts into the Telegram channel too। Okay, so for me right now 33,800 जो है वो देखने लायक जोन है कि बिटकॉइन इससे नीचे जाता है या इसके ऊपर होल्ड करके रखता है फिलहाल। सो अभी व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू डू इज कि अभी ये कैंडल तो नीचे की ओर बन रही है, बट अभी होना क्या चाहिए कि इस कैंडल के बाद में, क्योंकि ये थोड़ी सी बुलिश कैंडल होती है, ठीक है, ये एज सच ये दिखा रहा है कि यहाँ पे हम सेल करते हुए नीचे तक गए, बट बुल्स ने एब्जॉर्ब किया पूरा पूरा वॉल्यूम और बेयर्स को पूरा कंट्रोल नहीं दिया एंड वी पुल्ड बैक। तो अब ये वाली कैंडल जो है वो काइंड ऑफ इस तरीके से बने कि वी गो एट लीस्ट टिल 37,000 और थोड़ा सा ऐसे, एंड देन वी ट्राई टू होल्ड अबव इट, जो कि मुझे लग नहीं रहा है कि इन द नियर time we would be able to hold above it, and we ultimately like sink down and see another rejection somewhere here or maybe even lower।
ओके, सो जो मेजर मेजर जो जोन होगा अभी देखने वाला इज गोइंग टू बी अराउंड आई वुड से 35 से लेके 32,000 के बीच का ये जो जोन होने वाला है। ये जोन थोड़ा सा मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि कुछ एक्यूमुलेशन का जोन बनेगा, जहां पर की प्राइस थोड़े टाइम के लिए रहेगी एंड बिफोर वी सी अपसाइड और इवन अ डाउन साइड। ओके, जैसे कि हमने अराउंड मई और जून में देखा था लास्ट ईयर, जैसे हम इस जोन में आए थे डंप होके एंड देन वी सॉ कंसोलिडेशन समवेयर बिफोर वी सॉ द ब्रेकआउट। ओके, and if I one more thing is that this dump was totally obvious on the weekly standpoint, because वीकली पे हम बहुत टाइम से ये बेरिश डाइवर्जेंस देख रहे हैं। बेरिश डाइवर्जेंस जो होती है वो होती है बेसिकली जब प्राइस वॉल्यूम, प्राइस एक्शन और आरएसआई जो है हमारा, जो एक इंडिकेटर होता है, वो ऑपोजिट जा रहे होते हैं, कि प्राइस ऊपर जा रही है बट आरएसआई नीचे जा रहा था, तो इसको बेरिश डाइवर्जेंस बोलते हैं। तो ये बेरिश डाइवर्जेंस भी वीकली पे शो कर रहा था कि वी वुड अल्टीमेटली सी अ डाउनफॉल, जो कि हमने देखा है। तो एंड जब हम वीकली की बात कर ही रहे हैं तो आई वुड ऑल्सो मेंशन दिस कि वीकली क्लोज बिलो 40,400, जो कि हम नहीं चाहते थे, जो कि पॉसिबल था कल रात तक। आज अभी इस सिचुएशन में देखकर बोलना तो मतलब बहुत तगड़ा बुलिश मोमेंटम चाहिए होगा इन ऑर्डर टू गो अबव बैक हियर 40,400, क्योंकि हमारा ये जो लास्ट लो था, आई वुड टेल यू मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये जो है एक हायर हाई बनाया, ऐसे हायर हाई और एक लोअर लो बनाया है, ठीक है। फिर एक और हायर हाई बनाया और ये वाला जो लो होता है ये थोड़ा सा लो बनना चाहिए था, जो कि इस लो से लो बन गया है। तो काइंड ऑफ इसको कहते हैं ट्रेंड टूट जाना, ठीक है। तो अब हम एक वीकली अप ट्रेंड में थे, जो हम अब नहीं रहेंगे इन केस हम 40,400 के ऊपर क्लोज नहीं करते हैं, जो कि कैंडल एक दिन 10 घंटे में क्लोज हो जाएगी। तो वीकेंड्स हैं, ज़्यादा वॉल्यूम रहेगा नहीं। इट्स वेरी हार्ड टू से राइट नाउ कि we would be able to close above 40,400 or not. But you never know. Seriously, you never know. So let's see, wait and watch what happens. But in case वो नहीं होता है तो kind of weekly standpoint से भी थोड़ा सा bearish मामला हो जाएगा. So possibly we would see some consolidation in this zone here. ठीक है. So for now I would say a point that does not break down is something 33,800. ये नहीं ब्रेक होना चाहिए नीचे की, और अभी फिलहाल ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम। लॉन्गर टाइम फ्रेम आई थिंक ये बहुत इजीली ब्रेक हो भी जाएगा, ठीक है। एंड द लास्ट जोन दैट वी हैव टू होल्ड इज 29,000, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी यहीं से काफी बार बाउंसेस मिले थे हियर, एंड हमने यहाँ पे काफी बार और जो फाइनल जो हमारा मोमेंटम भी ऊपर की ओर गया है वो भी इसी जोन से गया है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू होल्ड दिस 29,792। ओके, so this was all the update with respect to Bitcoin, and yeah, yeah. So now you can ask me about any coins in case you have your own personal coins. And I would say कि Bitcoin, yeah, I would be taking FTM next, Savannah. Doge, okay. Yeah, Shraddha, it's a meme coin. But yeah, we could cover Doge. But I would say right now it's not the right time in order to invest your portions over there, क्योंकि um, because अभी मार्केट डाउन है एंड इट्स इन अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। तो जो कॉइन सबसे ज्यादा डंप होते हैं वो मीम कॉइन से डंप होते हैं। जब भी बीटीसी, बेसिकली कहते हैं ना कि जब पापा को प्रॉब्लम होती है कोई भी, तो सबसे ज्यादा बच्चे इफेक्ट होते हैं, और वो सबसे ज्यादा बच्चे इफेक्ट होते हैं जो कि वीक बच्चे होते हैं, तो सबसे ज्यादा कमजोर बच्चे होते हैं। तो ये मीम कॉइन्स जो हैं ये क्रिप्टो मार्केट के कमजोर बच्चे हैं, तो इसलिए। बट आई वुड स्टिल डू इट फॉर यू, बट आई वुड सजेस्ट कि अभी फिलहाल डोज कॉइन के अंदर कुछ इन्वेस्ट ना करें, ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम इट। हाँ, थोड़ा बहुत लेके रख सकते हैं जितना ना फर्क पड़े, बिकॉज या ऑब्वियसली व्हेन यू नेवर नो, क्या पता हम यहाँ से रिवर्सल ले लें। अगर हम यहाँ से रिवर्सल लेते हैं तो डोज अभी बहुत ज़्यादा चीप प्राइस मिल रहा होगा और बहुत इजीली आपको 20-30% रिटर्न दे देगा। बट या, लाइक इट इज़ व्हाट इट इज़, इट्स हाई रिस्क विद अ हाई रिवॉर्ड आउट देयर। सो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा अमाउंट डालना इन केस यू डू। Which what coins I will recommend? I will recommend the coins like all those coins that have
good fundamental values like Bitcoin, Ethereum, Solana, AVAX, DOT, BNB, Matic, ADA, Cardano, um, uh, FTM, EGLD, Luna, like coin like these. Okay. What about SHIB? Avinash, you are in good mood, I guess. SHIB is the Bitcoin is the father of the cryptocurrency, all the cryptocurrencies, and SHIB is the father of all the meme coins. Okay. So I don't have anything against the meme coins. I'm just telling that the market is too red. Don't get me wrong. Even I do trade in meme coins, but with the mindset that I have, um, uh, what what it takes in order to um, go through the loss in case I do incur it. Okay, so keep that in mind. Next, let's see FTM. Savannah has been waiting for it for a while now. Okay, let me remove all the lines. I've not seen FTM for a while now. Okay, I'll do one thing. I'll just put FTM here. Hey Ankita, thanks. Thanks for the support. By the way, do like the stream in case you're liking the stream, um, so that more people could come and join. That would really help. I would really appreciate it. FTM. Let's go on the daily time frame. Let's see what do we have here. So, Savanna, I would like to say that अभी इस टाइम पे obviously because Bitcoin has seen such a dump तो अभी सारे के सारे alt coins whether it's FTM or Ethereum or any coin see we got 21% and it's already like 46% for it. So ये dump जो है वो होगा सारे के सारे coins में but we could just go for good support regions. So I would just let me just go through and mark good support regions for it. अभी ये जहाँ से बाउंस हुआ है दैट इज ऑल्सो अ गुड सपोर्ट रीजन फॉर इट. ठीक है. दिस इज ऑल्सो अ गुड सपोर्ट रीजन जिससे अभी अभी बाउंस हुआ है. अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड ऑल्सो accumulate some FTM here. अभी लेवरेज ट्रेड तो करना ही मत. आई वुड से even if you do the same thing, do it with very less funds. Okay. So in case you are looking to invest in FTM, I would say I see FTM going pretty easily to this zone. Okay. So if you want a safer entry, I would wait for this zone. Let me see what we have on us. Mhm. Let's bring the averages. So the so as you can see, MA like there is a lot to go in order to catch up to the MA. Okay. So I think we could see a kind of a bounce kind of thing here. So in case you're able to take the entry, wait 1 second, I would say. Hmm, okay, let's remove this. Yeah. So like this would be the safer entry for FTM right now. Okay. In case you find FTM around this zone again, I would say till 1.80. Okay. So this could be a quick
scalping entry, but don't like, because considering the nature of the market that we are in, so don't like be in trade for a longer duration. Just quick book quick profits. So this is a good zone in order to take quick profit. यहाँ से एक probable छोटा सा bounce दिख रहा है जो कि I would exit around here 2.4 के around. So 1.93 1.93 से 1.94 के बीच में you can buy it and exit the trade around 2.4. And yeah, and in case you are looking for a good entry, safer one, तो वो बहुत आराम से 1.1 1.01 से 1.304 के बीच में बढ़ेगी. Okay, so these are your zones, these are the price zones, but also considering the situation of the market, uh, do try to keep a tight stop loss to your trades and manage them accordingly, because you never know. Sure. This is what I see for FTM right now, because अभी ये इस अप ट्रेंड पे था जो ट्रेंड अभी अभी ब्रेक हुआ है. I would say this was the uptrend that it was following, और अभी ये ब्रेक हुआ है. तो हाँ, there are high chances like this was a good position to take a trade, and maybe थोड़ी late हो गई हो, maybe it's coming down because BTC might be dumping a little. अभी as we saw BTC was coming down ना. So where is it? क्या चल रहा है BTC के साथ? इसीलिए अभी BTC को देखना बहुत ज़्यादा important है. Whatever that is happening in BTC is going to reflect what happens next in the whole market. Sorry. Okay, so this zone, if you get FTM in this zone, do buy it and book a quick profit here. So yeah, this could be a easy short-term trade of like oh, 33%. This is a good trade, but I would still say don't wait for कि मैं exit यहीं करूँगा. Okay, so it's going to be really volatile because अब weekend भी शुरू होने वाला है, volume होगा नहीं ज़्यादा, तो there is a possibility that we might see this thing happening. So in case you take a trade here, put your stop losses somewhere here according to your own loss management, and फिर उसके बाद में as soon as it goes up तो अपना stop loss ट्रेल कराते रहना. 2.3 तक 2.2 तक चला गया, 1.98 1.8 के अराउंड स्टॉप लॉस रख लो, जिससे कि कुछ प्रॉफिट तो बुक होगा. इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव सम प्रॉफिट rather than having no profit at the end. Okay, so yeah, this is it for FTM. What else we had? uh, yeah, okay, we'll do Doge too, no worries. um, I've done quite some analysis on Doge, I would say. So yeah, Doge is in a good position to buy right now, I would say. In case you're looking to invest something, you could really put something here. Yeah, and we have already seen a bounce from this zone. So wherever it is, you could just put some of your amount here, and let's say like you can't say anything. Like if Elon Musk would come और एक tweet कर देगा, the price would shoot. Okay, so Doge is like just like any other um, uh, just like any other meme coin, but yeah, it has started to show some potential recently with being listed on Tesla's website for the March and stuff. क्या आई वुड से कि ये जो जोन है 0.12 सेंट्स का इज 12 सेंट्स का जो जोन है, ये इज अ गुड बाइंग जोन फॉर डोज. सी इफ यू कुड बाय इट विद अ टाइट स्टॉप लॉस फॉर श्योर. अगर वापस आता है यहाँ पे बाय करो, एंड लेट्स होप फॉर गुड.
Hey, buddy. Thanks, Savannah. Anytime. Let me know if you have any other requests for any other coins out there. Um, I would be happy to take them. Or you, or if you have anything to talk about, we can talk too about like what do you think? What questions do you have in mind right now and stuff? Okay, Matic. I would quickly see Matic. Matic is a good coin to have. And oh, let me delete everything first. Yeah, and it's really available in such a discounted price. I think you should grab some Matic here, even if you go down. Like just hold it, buy it in spot, and you'll thank me like in few months, in case you don't see a bear market for sure. So about Matic, let me go on daily and see what are these zones that we have. Obviously, like most of them would be in their support zones only because we've seen a massive dump and they would have only bounced from a support zone because support zone होते क्या हैं जहाँ से basically buying करी हो और वहाँ buying कोई क्यों करेगा. Yeah, Daniel, I would see for the SXP too. And let me know if you don't understand Hindi because I'm kind of like switching to and fro to it. So I'll do the SXP in English too. Um, so supports होते क्या हैं जहाँ से पहले या तो रिजेक्ट बहुत बार हुआ हो उसे तोड़ा हो तो इसलिए वो अच्छा सपोर्ट बन जाता है या फिर जहाँ से बहुत बार बाउंसेस मिले हो तो बाउंसेस क्यों मिलते हैं क्योंकि वहां पे पहले खरीदा गया है तो अगली बार कोई कैसे देख के खरीदेगा हम डेली पे क्यों स्विच कर रहे हैं हम इसीलिए स्विच कर रहे हैं ना बिकॉज यू वांट टू सी कि पहले कहाँ कहाँ से खरीदा गया था तो बाउंस वहीं से मिलेगा जहां से तो लोग बाइंग ऑर्डर्स कहाँ लगाएंगे वहीं लगाएंगे जहां पहले भी खरीदा गया है जहां पे डेटा है कह रहा है कि हाँ यहाँ पे पहले बाउंस मिला है तो मोस्टली अभी जो कॉइन्स होंगे चाहे मैटिक हो चाहे डोज हो चाहे एफटीएम हो ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी इन द सपोर्ट जोन्स ओनली मतलब मोस्टली प्रॉबेबली आई वोंट से कि सब होंगे ही ओके सो दिस इज ऑल्सो गुड सपोर्ट जोन एज यू कैन सी काफी सब अपने सपोर्ट जोन्स में ही बैठे हुए हैं अच्छी एंट्री बन सकती है यहाँ से आई वुड से यहाँ तक ओके एंड इन केस वी ब्रेक दिस तो हम लेट मी सी व्हाट्स हैपनिंग ऑन डेली ओके so this could be a good zone to buy some matic here and then some of it here in case you break down but I think we could see uh, a good bounce in matic whenever like btc थोड़ा भी stabilize होगा we would see a good response in matic. Yeah, so for now I would say कि ये दो zones हैं to look for in matic. um, one is around 1.53 जहाँ पे अभी exactly matic है till 1.42 and the other one is 1.19 to 1.04
जैसे कि आप देख सकते हो 4 आवर में उसके ऊपर ही 2 बार कैंडल्स अभी बनी है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से अच्छा बाइंग आ रही है, बाइंग मिल रही है। ये कैंडल ये शो करती है कि ये सब बेचते गए एंड बुल्स ने वॉल्यूम अब्जॉर्ब किया और कैंडल को ऊपर क्लोज कराया। और ये कैंडल ये कहती है कि बुल्स ऊपर लेके जा रहे थे और बेयर्स ने पुश करके नीचे कैंडल बनाया। तो ये दो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी कैंडल्स आजू बाजू बन रही हैं। ठीक है, सो इट्स गोइंग टू बी गुड टू सी इफ इट होल्ड्स 1.43 और नॉट। आई वुड से जस्ट बिकॉज कि यहाँ तक आया है तो यहाँ पे दोबारा भी आ सकता है, तो लेट्स एक्सटेंड दिस रीजन टिल हियर। इसको यहाँ ले आते हैं। तो यहाँ तक का ये जोन है। इसमें इफ यू फाइंड मैटिक डू बाय इट, डीसीए कर लेना। सो आई वुड से इन केस you are putting 1,000 rupees 1,000 rupees in there, so put some 30 here and 40 here. Okay, and then safeguard 30 more for in case it dumps more. ठीक है, तो DCA करना। This is a good position for it. Okay, so let's move to SXP. SXP, I don't follow SXP by the way, but I would just see what's happening to it. Okay, so it's been on a downtrend for a while now, और ये काफी काफी टाइम तक डाउन ट्रेंड पे रहता है। ये जो जोन है ना, बहुत ही ज्यादा सही जगह पे बैठा हुआ है अभी एसएक्सपी। आई वुड से इट्स एट अ वेरी क्रिटिकल पोजीशन राइट नाउ। ओके, आई वुड टेल यू व्हाई, बिकॉज वी आर काइंड ऑफ फॉर्मिंग अ डिसेंडिंग ट्रायंगल। काइंड ऑफ क्या, वी आर फॉर्मिंग अ डिसेंडिंग ट्रायंगल। जस्ट अ मिनट। या, सो वी आर फॉर्मिंग अ डिसेंडिंग ट्रायंगल हियर। ठीक है, जो कि ये ट्रायंगल है, जो काफी एडमेंटली बन रहा है और मतलब काफी ही टाइम से बन रहा है, मार्च से बन रहा है करीब। ठीक है, सो वी सॉ दिस हियर एंड नाउ वी आर डाउन हियर। अभी भी हमें इतने डंप के बाद में भी यहीं से बाउंस मिला है, इसी जोन से, जो कि पहले भी काफी बार बाउंस दे चुका है। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर भी इतने में जोन्स में सॉरी। तो दिस इज क्वाइट अ जोन। तो बट आई वुड टेल यू कि जो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल होता है, इट इज अ बेरिश पैटर्न। सो देर आर चांसेस ऑफ इट ब्रेकिंग डाउन। और ये टारगेट जो है वो इन केस आई एम सेइंग इन केस इट ब्रेक्स डाउन, तो इट वुड ब्रेक डाउन, जो कि पॉसिबल नहीं है होना बिकॉज इट्स गोइंग इन द नेगेटिव्स। सो आई वुड से कि डिसेंडिंग ट्रायंगल अगर नीचे जाता तो पैटर्न इनवैलिडेट हो जाता, बिकॉज ऑब्वियसली द वैल्यू कांट गो इन नेगेटिव्स। बट ये काफी काफी नीचे आ गया, एंड आई वुड से कि दिस कुड बी अ गुड जोन टू बाय इन केस इट कम्स डाउन। बट अगर ये ब्रेक आउट होता है यहाँ से, जिसके भी चांस थोड़े से डाइसी हैं अभी, बिकॉज कंसिडरिंग बीटीसी का जो सिचुएशन है, तो कुछ नहीं तो कम से कम यहाँ तक का तो एक पहला टारगेट, दूसरा टारगेट इन केस इट ब्रेक्स डाउन। तो टारगेट वन would be this for me, and target two. But I would say it's already too low
काफी लो है, और ये नीचे इसके नीचे ब्रेक डाउन कर गया। आई वुड से कि यू शुड वेट फॉर द एंट्री। मैं अगर पर्सनली एसएक्सपी में यू वुड आस्क तो मैं एंट्री भी नहीं लूंगा, टू बी ऑनेस्ट। एंड इन केस यू आर गोइंग टू टेक एन एंट्री, तो डू टेक इट एट 0.6092। ठीक है, इससे पहले मत लेना। या एसएक्सपी वुड बी 0.6092। दिस इज द बेटर एंट्री फॉर इट। No worries, Daniel. Anytime. Pivot points for BTC. Sorry, guys. Pivot points for BTC where we could potentially see reversal. Okay, so I would just say कि right now what I think is that we could be seeing BTC towards 30K. Like I could say it with some confidence, considering that कि ये वेज ही देख लो। लेट्स टेक दिस वेज ओनली। और अगर ये इस वेज से भी अगर हम देखते हैं कि इसका टारगेट क्या है, तो इस वेज का ब्रेकआउट हुआ है यहाँ से, समवेयर अराउंड यहाँ से। तो यहाँ से भी ये जो ब्रेकआउट है, तो ब्रेकआउट जो पड़ता है वो अराउंड 26,500, मतलब 27,000 तक का वेज बनता है ये, बिकॉज वी हैव ब्रोकन डाउन। ऑल्दो दिस डिसेंडिंग वेज जो है, ये एक बेरिश पैटर्न होता है जो ऊपर की ओर टूटता है। बट हर सॉरी एक बुलिश पैटर्न होता है जो कि ऊपर की ओर टूटता है। बट हर बुलिश पैटर्न जो है वो, उसके चांसेस ओनली 70% होते हैं कि वो ऊपर की ओर टूटे। 30% हमेशा ये होता है कि नीचे टूटे। तो वही हुआ, हम थोड़े से अनलकी रहे इस टाइम। 30% हुआ एंड वी हैव ब्रोकन डाउन। तो अगर इस वेज वेज का भी टारगेट देखा जाए तो वो भी 27,000 है। अगर थोड़ा कंजर्वेटिवली देखूं तो, थोड़ा कंजर्वेटिवली अगर देखूं कैंडल टू कैंडल, तो भी इट्स अराउंड हियर। तो कैंडल टू कैंडल भी देखें तो भी अराउंड 28,800 के अराउंड आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है, व्हाट आई बिलीव इज कि बीटीसी थोड़ा हल्का फुल्का ऐसे रहे, यहाँ पे जाए, इसको रिटेस्ट करे, यहाँ से ऐसे रिजेक्ट हो। बेस्ट पार्ट क्या होगा कि इस चैनल के अंदर आ जाए कैसे भी करके। बेटर है कि वो ऐसे इस चैनल में रहे, कम से कम एक बुलिश ब्रेकआउट की उम्मीद तो होगी, जो कि मतलब जल्द ही हो। अभी तो ये है कि हम बाहर आ गए हैं इस चैनल से, तो हम इस चैनल के बारे में, टारगेट के बारे में ही बात कर सकते हैं। बट अगर हम इस चैनल के अंदर दोबारा वापस चले जाते हैं तो फिर हम इस चैनल के ब्रेकआउट की बात करते हैं। पर अभी तो फिलहाल ये चैनल इनवैलिडेट हो चुका है, तो इसका टारगेट कायदे से ये है। ठीक है। सो ऐसा हो सकता है कि हम यहाँ पे ऐसे प्राइस देखें, एक कैंडल इधर, दूसरी कैंडल इधर, and then we go, and then we have a retest and then get rejected, and somehow we consolidate here and then we go down, get a bounce from here, consolidate for a while, और फिर ऐसा हो सकता है एक लास्ट बाउंस देखें हम यहाँ तक ऐसे नीचे की ओर, जो ऐसे डराए लोगों को, टेलिंग देम कि ओके वी आर गोइंग टू हैव अ बेयर मार्केट और समथिंग, जैसे लास्ट टाइम हुआ था, एंड देन वी सी अ ब्रेकआउट टुवर्ड्स अपसाइड। ठीक है। तो दिस इज अ पॉसिबल सिनेरियो। आई एम नॉट सेइंग कि यही होगा, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज गोइंग टू हैपन, आई एम जस्ट सेइंग दैट दिस इज अ पॉसिबल सिनेरियो दैट कुड हैपन। And apart from that, there is a possibility that we could see a move, a retest of up in an upward direction from here, or possibly we should see a possible upward scenario from this zone, because obviously this is a good zone. This has been a good support. And last time also, as I told you before also, हमने यहीं से breakout देखा था. We went up and then we kind of like found support and then we went up and then we went for the all-time highs. So this is a good zone to keep in mind. But even if we consider this falling wedge, descending wedge, तो भी टारगेट जो है वो अराउंड 28,800 के अराउंड पड़ता है। तो आई वुड से कि मैं इस जोन में बीटीसी को आते हुए देख रहा हूँ। बट या ऑब्वियसली थिंग्स वुड चेंज। आज मोमेंटम थोड़ा सा बेरिश है, सो यू नेवर नो। बट कल जब मोमेंटम थोड़ा सा बेरिश नहीं होगा, कल हमने मान लो कि कैंडल देखी ऊपर की ओर,
जाते हुए और इस चैनल के अंदर, तो फिर चीजें चेंज हो जाएंगी, तब प्रिडिक्शंस चेंज हो जाएंगी, तब बातें चेंज हो जाएंगी। आज लोग ऐसे भी दिख रहे होंगे जो कि ये बोल रहे होंगे कि अरे बीटीसी अब $10,000 चला जाएगा, $5,000 चला जाएगा। सो जस्ट गो विद द मोमेंटम। मार्केट जो है वो इसी पे चलता है, सेंटिमेंट पे चलता है। सेंटिमेंट की बात की है तो लेट्स सी फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का क्या सीन है, कहाँ तक पहुंचा है, कितना डर है, कितने कांपे हैं लोग इस डंप के बाद। आई होप सवन्ना आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। um, in short, I see Bitcoin to hold some time here and majorly here. Okay. And like as we move forward, I'll keep you guys updated on the Telegram channel what I'm seeing right now. अभी फिलहाल on a shorter time frame, I would say कि 33,800 should be a zone where I think कि BTC थोड़ा सा hold कर जाए. Okay, 33,800 के around. और let me just see कि यहाँ पे क्या सीन रहा है पुराना. Like you would see a lot happening. So is it good to take short positions now? I won't recommend. Okay. Like for example, हम जब यहाँ पर थे और हमने ये देखा हम रिजेक्ट हो रहे थे यहाँ से, तो you could have taken a short position here. ठीक है, यहाँ पे ले सकते थे, बट वो भी then again with a downside with a stop loss management कि हाँ in case we go up because obviously we have हम 21% डंप कर गए हैं कल से लेके आज तक में, we have dumped for like 21% up till now and it's high time that we see some bounce coming back. Okay, तो कुछ रिलीफ बाउंस तो कहीं ना कहीं तो आएगा ही। तो इन केस यू गो फॉर अ लॉन्ग, इन केस यू गो फॉर अ शॉर्ट एंड देन अल्टीमेटली यू गेट अ लॉन्ग एंड यू गेट टू हैव लॉस। सो आई वुड से कि थोड़ा सा वेट करते हैं मार्केट के अंदर, लेट बीटीसी स्टेबलाइज, होल्ड अ पोजीशन, लेट अस show its own stance कि what is it actually going to do, what it is actually presenting on the charts, then we would go for a long or a short position. But for now, I think we should just wait for a while and see what's happening with it. But at the same time, you could always go for the zones in order to buy. I would say I took an Ethereum trade here, and in case Ethereum comes here, I would also DCA Ethereum here. So it's just like a it's just like planning for a bit of a more dump here, not like obviously you can't say with the surety, right, कि हाँ यहाँ से बिटकॉइन अब ऊपर ही चला जाएगा. So there is always possibility once you're seeing a dump like this that you might see another wick coming down or something. तो ऐसा हो सकता है कि we could see something like this here, a wick going down and then a bounce back. So don't indulge in any shorts, but yeah, in this scenario short is a better trade than a long. So try to go for shorts from the रेजिस्टेंसेस, जैसे कि अब ये एक रेजिस्टेंस है, इन केस वी गो डाउन तो आप यहाँ से ले सकते हैं शॉर्ट. ठीक है, सो या शॉर्ट इज अ बेटर ट्रेड. Sorry if I'm coughing too loud. I'm actually not feeling much well, but I was just thinking of coming to live. Um, guys, in case you have not liked the video, do like. Resistance to short from what price? Okay, so you're asking what price, what should be a good resistance to short from? I would say short from here, I would say 37,000. Let's take a wick or some zone. I would say short from 37,400 here. In case BTC shows a bounce back, which it would at some or the other point of time, it would go up. Okay,
So I'm expecting it to get rejected from here, 37,400 here around. So have a have a trade here and इस जोन से मेरे हिसाब से BTC जो है शॉर्ट होगा. So this is a good zone to short BTC, like this zone, this 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 zone. Okay, and your stop loss should be somewhere here above these candles. ये जो candles का area है इन candles के ऊपर. So if you're asking me the price, so I would say 37,400 is a good price to short, but still see what's happening in the market. ऐसे नहीं कि यहाँ से कैंडल आई और ऊपर की ओर जाया जा रही है बट फिर भी हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे. जस्ट सी व्हाट्स द मोमेंटम. ठीक है. In case you see a bigger wick going up, then wait. 40,000 is also a good position to short. ठीक है. In case we are seeing ऐसा ऐसा wick दिखता है, ऐसा कैंडल ऊपर जाता हुआ दिखता है, तो 40,000 इज अ गुड प्लेस टू शॉर्ट. क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत मुश्किल से टूटा है, ये टूटने नहीं वाला था और ये बहुत मेजर सपोर्ट है हमारा 40,000 40,400 का जो टारगेट जो जोन है, काफी मेजर जोन है. तो यहाँ से तो पहले टाइम तो रिजेक्शन मिलना ही मिलना है. इन केस नहीं मिलता है तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक ट्रेड में नुकसान होगा, कम से कम मोमेंटम तो पॉजिटिव हो जाएगा BTC का. तो आई एम जस्ट किडिंग. सो ट्राई टू लाइक मैनेज इट. जस्ट सी कि कैंडल का सिचुएशन पोजीशन क्या है. कैंडल अगर ऐसी ही बन रही है थोड़ी सी आराम आराम से धीरे धीरे, ऐसा सच बहुत ज्यादा तेजी से कोई ब्रेकआउट टाइप का नहीं आ रहा है, तो टेक अ टेक अ क्विक शॉट फ्रॉम 37,400 इस वाले जोन से. इन केस इट गोज इवन अपवर्ड्स तो 40,000 40,400 वाला जो जोन है, इट इज अ बेटर पोजीशन टू शॉर्ट. इज इट क्लियर? Guys, you can put your questions out there. You have 5 people watching me, and it's my first live, so you could put any coins or any questions out there in order to ask me about it. I would just share my opinion and suggestions and price targets what I see for them. In case you are going, you're looking for a trade in Solana, so I would suggest going for a trade in Solana from here, 79 to 90. This is a zone to take a trade. I have taken an entry in Solana here. I just took an entry in Solana here. Thanks, Savannah. I'm just trying to do my best. And in case you're coming to the channel for the first time, you could always subscribe the channel. Do watch the videos out there in case you like them. Do like and comment them on also. And if you want, you can also join our Telegram channel. And this is the link, Crypto Dunker. I'll also add the link into the chat where we update very small things. Like for example, if I would tell you, we take quick trades also out there. Like one of the amazing thing that we did was this trade. I told in the channel that I'm seeing a trade here, and in case we break upwards, so we could see 43,500, and in case we break downwards, so we would see 40,800. So I posted this and told about it. Then we saw a breakout, and we exactly hit 43,500 as told, and we exited the trade here. And then I also told कि stop loss लगाना, trail करना मत भूलना, यहाँ से कभी पलटी मार सकता है BTC का, you never know. Okay. And after that, I told that daily close would be very important. That's tomorrow morning, 5:30 a.m. And after it, let me know by reacting. Sorry, this is not the post I was trying to say. I would say, yeah. Now the important thing would be if BTC could hold above the red zone. ये मैंने post किया था. हम ऐसे ऊपर गए and then we got rejected exactly from our target, which was like to the precision, exactly from our target, and we went back, came back.
Then I told you guys key important thing would be if we hold above the red zone and not dump back to the consolidation zone. And the very next day, what happened? We saw this. We dumped hard. We dumped like this red zone में हम रुके ही नहीं. हम नीचे आए. And this was like already told onto the channel. I've like made 3 videos, 2 shorts on this, telling that we might see 36,000, 36,000. So this was like if you joined our Telegram channel, you would have exited at a very nice place. आपको लॉस नहीं हुआ होता because you knew कि this could happen. Stop losses manage करते. So yeah, Telegram channel is a good place to be in, I would say. So join our Telegram channel in case you have not. If you're coming for the first time on my channel, then consider subscribing too. I would just put my Telegram channel's link into the chat box. Telegram channel. What else would you like to ask or anything? If you have any more questions or if you want me to look at anything else. Um, Personally, I'm right now not doing any leverage trades. And as I shared in the Telegram channel, so last night I did a 26% good trade in Sol and uh, 5% trade in Coty. So I booked kind of um, uh, kind of my profits out there. My positions were a bit big, so I don't overtrade because I believe ki okay, your when your dues are done, you just sit back for a time and relax. So, but yeah, I would be also DCAing my positions. So as I told you in BTC, I would take something at 33,800, which I've already taken. In case it goes down, I would buy something at 30,000 also. For Ethereum, I'm looking for this zone. I've already bought in this zone in case I go for daily. So I'm looking for this zone, 24,000 to 26,000. Sorry, 2,400 to 2,600. And in case we dump down from there, so my ultimate zone is gonna be in from 1,800 to 1,700, 1,900. So I'm going to DCA in these zones because obviously you never know where the bounce or reversal would come. We are talking here, and Sarah, we are talking about the bearish momentum and everything. And you never know कि हम यहाँ से ऐसे move कर जाएं ऊपर की ओर and we see a bigger upward momentum or even a downward momentum. So DCAing in this such position is the only thing that you could do. And this is not the first time that we are seeing a dump. In case I just take you to the daily and we just compare it with what happened before. So we were here and from the top we almost came down to this zone around 55%. Okay, so we dumped till 55%. And if I see how much have we dumped here, so it's 50%, around 50%, right? So if we go for 55%, 56%, it's almost to the exact zone here. So it's not like that we have not seen dumps like this. We have already seen this dump which was 55%, and if we go from here, it's going to be 56% here. So
So we have seen the dumps, and also after those dumps, big dumps, we have seen the all-time highs also. We have seen it break the all-time high. So it's going to be some time. It's going to be a time of consolidation. It's going to be time where your patience would be tested into the market, and it's going to be a boring, slow market. I think February is going to be slow and boring. Sorry. And once we see some breakouts out there, let's see the fear and greed index is 13. That's good. That's good because once we see some lower values in the fear and greed index, we tend to see some upward movement in the coming future. But it's not key, it's not a direct indication of that. But yeah, you do sometimes. Shraddha is saying, what about the ADA entry zone? Okay, I'll just quickly look towards ADA and then I'll end this live. In case you guys have any other questions, you could directly put. If you have not liked the stream, do like it, and it really motivates. ओके, तो एडीए तो अपने जोन से इतना प्यारी तरीके से बाउंस किया है. आई टोल्ड यू गाइस इन दी प्रीवियस अपडेट ऑल्सो कि हम इस डिसेंडिंग वेज में थे एडीए के साथ में, और एडीए यहाँ से ब्रेकआउट देखा एडीए ने. द फर्स्ट जोन टू टेक द प्रॉफिट वाज हियर. यहाँ पर एक डबल बॉटम भी बन रहा था जो कि इनवैलिडेट हो जाता अगर हम इसके नीचे क्लोज करते, जो कि हमने किया, और डबल बॉटम का ब्रेकआउट नहीं हुआ, एक फेक आउट था, वापस आ गया. फिर हमने आज इसी डिसेंडिंग वेज की जो ट्रेंड लाइन है इससे हमने काइंड ऑफ बाउंस लिया है, और अभी भी हम इस ग्रीन जोन के अंदर हैं. तो इन केस यू टुक एंट्री इन अ ग्रीन जोन, तो आप अभी करीब 10 10-11% के प्रॉफिट में हो गया, और करीब 13-14% का प्रॉफिट निकाल लिया होता बिना लेवरेज के बहुत आसानी से. तो ये ट्रेड हमने अपनी लास्ट लास्ट वीडियो में दी थी. अगर आपने वीडियो देखी थी तो यू वुड हैव मेड योर प्रॉफिट. बट आई वुड से कि अभी एडीए का आई वुड सी एंड ग्रैब सम एडीए हियर, एक $1 के आसपास. एंड इन केस वी ड्रॉप इवन लोअर देन दैट, तो तो आई वुड हैव some of it in this zone here. It's just 70 cents. 70 cents is gonna be my zone. And ये ऐसा भी कुछ हो सकता है कि we might see it re-entering the channel, फिर रीटेस्ट करके नीचे की ओर आते हुए, और ऐसे कुछ ऐसा types. Okay, so I would grab some ADA here and would wait for 0.69 and would take an entry here also. As I told, it would all depend on how BTC reacts. In case we go to 29 or 30 tonight, we'll see ADA towards 60 cents very easily. So if you have been in crypto market, you know these are discounted price zones for all the cryptocurrencies that you have seen. In case you have, if you can grab 60 cents of ADA at 60 cents, and it goes back to its $3 all-time high, you're already doing like 5x of your money straight away. That's like around 350% of profit there. So when you're here, you're talking about, okay, I need to grab it. When it comes down, so people get too scared. Sorry, people get too scared and they're like, "Ki, where to buy, whether to buy or not." So this is what we have to talk to ourselves. We have to think about, कि I am going to invest something out there, and there are possibility that market could go down, and I would have to hold for a period of time. So only invest that amount जो कि आप invest कर सकते हो lose करने के लिए भी, और साथ ही साथ hold करने के लिए भी. तो yeah, so this is my price zone for ADA. It's going to stick to the same thing that I mentioned before, $1.2 से लेके 1.09019 तक. एंड इन केस यू फाइंड 70 सेंट्स के आसपास अगर मिले, तो डू ग्रैब इट. 70 टू आई वुड से 60 सेंट्स इस जोन में अगर मिलता है आइडिया, तो डू ग्रैब इट. ओके, कार्डानो इज ऑल्सो ग्रेट प्रोजेक्ट. It's been almost an hour now.
If you guys have no more questions, I would just wait for 1 minute and then we'll quit this live for today. And it was really fun talking to you, hearing your queries and answering to them. Let me know how you like the video. Do comment on the video. And if you have not yet liked it, do like too. And just do whatever you can in order to support me, guys. I'm just trying my best in order to provide the best possible content to you in the best possible way. I hope it's going to you in the same manner. Thanks, Shraddha. Okay, so this is it for this video, guys. Do like the video in case you have not liked it. Do comment on the video. Subscribe the channel if you've liked the video. Do join our Telegram channel in case you want quick updates and instant trade setups out there because it's not possible to make a video every time. So I post updates over there. So do join the Telegram channel. I'll put the link in the description. And yeah, that's it. Thanks, Daniel. So I would see you soon. Let's hope we see a greener market next time we meet. And this is it. Stay healthy, stay safe, and keep trading. Good night, guys.